first, let me introduce myself, all of you. I'm Dr. Anshul Rana Agarwal, and I'm the founder of Sampurna, which is based in Delhi. It is a wellness, healing, and spiritual center. Here we take all the 5 elements, that is your Panch Tattva, as the basics, as the core, and we treat all your ailments, your lifestyle with Vedic diet plans, with yoga, with the yoga therapy, with the pranayam techniques, with meditation, and also numerology and astro tarot. So all the base, all the core is basically your 5 elements. So when we talk about 5 elements, तो ये पंच तत्व होते हैं आपके fire, air, space, water and earth. So for example, fire element, it represents all your metabolism, the thermal energy in your body. That is all the enzymes, your amino acids, and the hormones which are taking role in the metabolic process of your body. It also represents your intelligence. Okay. So today our basic topic of discussion would be anxiety. So anyone who can tell me what anxiety is? You could be wrong, but it's okay. Anyone out there who wants to just say or tell me what anxiety is? Fear. Okay, fear. See, anxiety simply means घबराहट. ठीक है, आपको घबराहट होना, आपको कहीं जाना है, कोई मीटिंग है और आपको घबराहट हो रही है, आपकी स्वेटिंग हो रही है पाम्स में, ठीक है, या फिर आप एंशियस हो रहे हैं, योर पैल्पिटेशंस, योर हार्ट रिदम, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ओके, सो द कॉजेस कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी फियर, इट कुड बी स्ट्रेस. अगर आप बहुत ज्यादा अनड्यू स्ट्रेस ले रहे हैं, व्हाट हैपेंस इज वो एंजाइटी की फॉर्म लेने लग पड़ता है. The stress could be for any reason. For example, you're stuck in a traffic jam and you have to reach somewhere at a particular moment, at a particular time. आपको स्ट्रेस हो जाता है और वो स्ट्रेस घबराहट और एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है. So what is the easiest way to deal with anxiety? First of all, in a situation, you should see कि क्या मैं कर सकता हूँ. How can I deal with that thing? Can you deal with that thing at that moment? Well and good, go ahead. But if you cannot, just surrender and let the time pass by. You should never force yourself up into anything. Okay? क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, आपकी बॉडी की वेल बीइंग ही खराब होती है, and in the end you do not get any good result. क्योंकि जो चीज टाइम पे होनी है वो अपने आप ही होनी है. Okay, so today we'll also see that what anxiety is and how our lifestyle basically triggers anxiety, and basically how our food triggers anxiety. Okay, so I'm just sharing the presentation with all of you. Are you all able to see my screen? Yeah. Yes, yes. Is it clearly visible? Yeah. Yes. Okay. So first of all, I'll describe the elements so that you get a clear understanding. ठीक है? हम 3 टाइप के 5 एलिमेंट्स होते हैं और ये पांचों एलिमेंट्स 3 टाइप के वाता पित्ता और कफा में डिवाइड होके पंच महाभूतास को डिपिक्ट करते हैं. ओके, सो वाता मींस योर एयर इन स्पेस. एयर मेनली डिपिक्ट्स योर नर्वस सिस्टम इनसाइड योर बॉडी. Are you clear? Nervous system inside your body, and then space means जो भी empty spaces है आपकी body में, your nasal tract, your station tube, your thorax cavity, जो भी empty spaces है आपकी body में, वो space element depict करती है. पित्ता fire का मैंने आपको बताया था. Water means all the watery secretions in your body. Okay, जो भी watery जो भी synovial fluid होगी या जो भी mucus secretions होगी, जो भी fluids आपके दो body के structures को bind करके रखती है, that depicts the water. And वैसे भी 70% of a body is water. Then comes kapha. Kapha, it represents the water and earth element. Okay, earth means all your organs in the body, your skin, your hair and your nails.
तो हमें भगवान ने 3 टाइप के इंडिविजुअल्स में बांटा हुआ है, जिसे बनाया हुआ है। ओके, कफा इंडिविजुअल्स जो होते हैं यूजुअली आप देखेंगे वो हेवियर साइड की तरफ होते हैं व्हेन दे आर बोर्न, व्हाइल दे आर बोर्न। उनकी स्टॉकी बिल्ड होती है, ठीक है, उनकी स्किन बहुत ग्लोइंग होती है, दे आर इजी गोइंग, लेकिन वो हेवी स्लीपर भी होते हैं एंड दे आर वेरी काम पीपल। उनको बहुत कम गुस्सा आता है, वेरी वेरी अफेक्शनेट, वेरी कंपैशनेट पीपल। Okay, and their hair are also wavy, they are very lustrous, they are very shiny. पित्ता इंडिविजुअल्स जो होते हैं, दे आर वेरी एम्बिशियस, स्ट्रॉन्ग हेडेड, विल पावर उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मीडियम बिल्ड के होते हैं, वो बहुत जल्दी लूज कर लेते हैं वेट, बहुत जल्दी गेन भी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, हॉट टेम्पर्ड होते हैं, लेकिन अगर उनका आउट ऑफ बैलेंस ही चले जाए तो व्हाट हैपेंस इज बहुत ज्यादा एग्रेसिव, एंग्री और ग्रीडी भी हो जाते हैं और जेलस भी हो जाते हैं। When we talk about Vata individuals, these are thin, lean people. No matter how much they eat, हम कहते हैं ना बहुत खाता है लेकिन फिर भी फैट नहीं चढ़ता. These are the Vata individuals, and these individuals are the most prone towards anxiety. ये लाइट होते हैं, एरी क्विक, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, दे लव टू जॉग, दे लव टू रन, दे आर वेरी एक्टिव माइंडेड, बहुत ज्यादा हाइपर थिंकर होते हैं, हाइपर एक्टिव भी होते हैं, ये ओवर थिंक भी बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द वाता, जो कि एयर और स्पेस एलिमेंट है, वो हाइपर एक्टिव रहता है। तो अगर बहुत क्लियरली, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कफा इज द पोटेंशियल एनर्जी, पित्ता depicts the thermal energy, vata depicts the kinetic energy. Okay, so when we talk about anxiety, क्या एंजाइटी कॉज कर सकती है? दीज आर द मेजर कॉजेस। एक तो डाइट, ठीक है, आपकी प्रकृति किस टाइप के आप इंडिविजुअल है, आर यू द वाता, पित्ता और कफा टाइप? एज आई सेड, वाता वाले सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं, लेकिन अगर पित्ता और कफा वाले इंडिविजुअल्स अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस नहीं करेंगे या फिर प्रॉपर डाइट या डाइटरी फूड्स आइटम्स अपनी बॉडी के हिसाब से चूज नहीं करेंगे, दे ऑल्सो गेट प्रोन टू एंजाइटी। एंड द रजासिक फूड्स, नाउ व्हाट आर रजासिक फूड्स, उसको हम बाद में थ्रू आउट हम पढ़ेंगे। Your sleep and lifestyle, see, if you're not sleeping on time, one of the major reason of anxiety is also this: at 9 p.m., post 9 p.m. onwards, there is a stress hormone called cortisol. उसका लेवल आपकी बॉडी में बढ़ने लग पड़ता है। Now what happens is when the hormone gets released, it causes glucose to release, क्योंकि आपके cells wake up होने के लिए, जगने के लिए रात को ग्लूकोज डिमांड करते हैं, that we are waking up, the body says it needs energy to wake up. So what happens is cortisol, इंसुलिन जो पेनक्रियास से रिलीज होता है और जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, मींस इंसुलिन, इट पुशेस द ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स, उसकी रिलीज और उसकी सिक्रीशंस को कम करने लग पड़ता है। What happens is a stage कम कि इंसुलिन की मात्रा खुद ही कम होने लग पड़ती है और the cells they fail to recognize कि हम exhaust हो गए ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते करते, and we fail to recognize any more insulin, and you develop type 2 diabetes. So that is why it is important to make a work-life balance जिसमें आप proper time पे रात को सो रहे हैं and wake up early, because post 3 a.m. till 6 a.m. the kinetic energy in the cosmos is very very high. That is why it is known as the time for manifestations also, for learning also. As we say, kids or the students, you should get up early because your brain is sharp or mind is sharp at that time. This is one of the reasons for that. Okay, so then comes heartbreak. When breakups happen, again your chakra gets blocked. Self criticism, कुछ लोग बहुत ज्यादा self doubt करते हैं, self pitying mode पे होते हैं. This is also one of the causes of anxiety. And your lifestyle. Now what happens is when you are a regular lover of clubbing or night clubbing or listening to loud music, now आपका जो space element है वो active हो जाता है. And what happens is loud noise से आपका nervous system stimulate होता है, because your neurons become active, they get hyperstimulative and they will further shoot your anxiety. तो अगर आपको already anxiety की problem है and you feel like let's go and chill out and do the clubbing, it will not do any benefit. It will rather turn out to be harmful for you, because loud music is increasing or activating the air element in your body through space,
and it will further increase your anxiety. Again, people who travel a lot, अगेन काइनेटिक एनर्जी इसमें इंक्रीज हो रही है. अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी एंजाइटी बढ़ेगी. तो यू हैव टू बैलेंस योर एंजाइटी बाय वेरियस मीन्स व्हिच विल बी डिस्कसिंग फर्दर. रेनी सीजन, बहुत सारे लोगों को रेनी सीजन में बॉडी एक्स होते हैं. सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस, बिकॉज कॉस्मोस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है. अगेन, अगर आप बीच में जा रहे हैं मॉनसून के टाइम, एंड स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर्स, और यू आर प्लानिंग अ हॉलीडे ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन एट दैट वेरी प्लेस, इट विल इंक्रीज द एंजाइटी. हाइपर एक्टिव पीपल, देन एज ग्रेटर देन 50 इयर्स ऑफ एज में वैसे भी एंजाइटी ज्यादा होने लग पड़ती है, क्योंकि हमारी डीजेनरेशन बॉडी की शुरू हो जाती है. मीन्स द काइनेटिक एनर्जी शूट्स अप इन आवर बॉडी, आवर एजिंग प्रोसेस शूट्स अप. सो इस टाइम में हमें बैलेंस करना होता है. Overthinking, constipation issues, sleep pattern, as we discussed before, and drinking and smoking also increases the anxiety. Alcohol is one of also the reason, और smoking में क्योंकि आप air element बार बार अपनी बॉडी में एंटर करवा रहे हैं स्मोक से, again it increases the anxiety. So what is the symptoms of anxiety? Constant fear, ये डर लगना कि कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ. आपको रात को नींद नहीं आना, इंसोम्निया के इश्यूज डेवलप होना, डिजीनेस, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे लगता है कि मैं बस थका हुआ हूँ. बहुत ज्यादा वरी करते हैं, गुस्से में रहते हैं, क्रैंकी रहते हैं, रैपिड आपकी हार्ट बीट रहती है, रेस्टलेस रहते हैं. यू कैन नॉट सिट एट वन प्लेस, यू आर ऑलवेज रेस्टलेस ऑल द टाइम, यू आर स्वेटिंग, योर पाम्स गेट वेट. मसल टेंशन, मसल में ट्विचिंग भी होती है, काफ मसल्स में या शोल्डर्स में, आपकी सर्वाइकल में आपको दर्द रहेगी. So one of the causes of anxiety is your food. भले ही हम घर का खाना क्यों ना खा रहे हो, भले ही हम घर का खाना ही क्यों ना खा रहे हो, so there are certain foods which we should avoid if we are suffering from anxiety. So you should avoid foods with these taste. Ayurveda के accordingly 6 types of taste होते हैं. As in the diagram you can see, it is all seated on your tongue. That is sweet, sour, pungent, bitter, salty, astringent. So what happens is, जब anxiety अगर आपको है तो pungent, जो कि फायर और एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इस टेस्ट के फूड आपको अवॉइड करने चाहिए. नाउ पंजेंट मींस बेसिकली स्पाइसी फूड. बहुत ज्यादा आप स्पाइसी चिली फूड ना खाएं. डोंट गो फॉर लॉट ऑफ गार्लिक और लॉट ऑफ अनियंस इन योर मील्स. Some people, they have lot of habit of eating salads. They go for weight loss diets also, and they have a lot of raw food in the form of salads. Actually, raw food, it increases or shoots your anxiety. Even apples, they shoot your anxiety. Pomegranate shoots your anxiety. Why? क्योंकि उनका टेस्ट होता है astringent. Okay, astringent means शीत, ठंडा. It is not warm. जो भी ठंडी चीज होगी वो आपकी एंजाइटी बढ़ाएगी. सो यू शुड ऑलवेज हैव योर मील इन वार्म स्टेट. आपका खाना हमेशा वार्म होना चाहिए. व्हाटएवर मील यू आर हैविंग एट व्हाटएवर टाइम ऑफ द डे, इट शुड नेवर बी कोल्ड. एंड बिटर, बिटर मीन्स कड़वा. कड़वा आपको पता है, करेला, दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग विच इंडियंस हैव. तो अगर आप कड़वे टेस्ट बहुत ज्यादा या आप करेला बहुत ज्यादा खा रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो शूट योर एंजाइटी. सो आप देखेंगे पंजेंट टेस्ट जो है बेसिकली आपके स्टमक को रिप्रेजेंट करता है और आपके हार्ट. ठीक है, तो जब भी आप पंजेंट चीजें खाते हैं, इन दो एरियाज को वो टारगेट करता है. बिटर टेस्ट जो है आपके लिवर, स्प्लीन और पैनक्रियास को करता है. और जब एस्ट्रिंजेंट की बात करते हैं, इट इज ऑल योर इंटेस्टाइन, योर ऑल गट. तो अगर आप देखेंगे, अगर आप एंशियस हैं तो आपकी गट हेल्थ खुद ही बिगड़ने लग पड़ती है. और अगर आपको रेगुलर एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी तक रहने लग पड़ेगी एंड कॉन्स्टिपेशन इश्यूज डेवलप होंगे. So I think this I had explained कि कौन से टेस्ट के होते हैं. So you can have a view. फ्रूट्स में आपको रॉ एप्पल्स नहीं खाने चाहिए. स्ट्यू करके जैसे आप बेबीज को देते हैं, आप यू कैन हैव इन दैट डे. हैव प्रॉपर बनानास, ग्रीन बनानास नहीं खाने. वाटरमेलन, फिग्स, रेजिन, ड्राई फ्रूट्स, ये सब नहीं खाने.
And always avoid cold cut meat salads, cold food and cold water. So you should always eat right according to your dosha. So अगर आपका वाता means बहुत ज़्यादा बड़ा है, you are prone to anxiety, or if you have anxiety, so these are the foods you should basically go for. Have carrots, क्योंकि वो sweet होती है natural taste में. Have pumpkins, okay. आप dairy products or oil भी add करें. Sesame oil is one of the best oil. Even you can go for a sesame oil massage. It will again calm you down before taking a bath. देन मोस्टली आप नट्स लेग्यूम्स ये सब आप ऐड करें, और राइस जरूर ऐड करें अगर आपको एंजाइटी है. राइस जो है वो कफ वर्धक होती है, तो आपके वाता को, आपकी काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी बैलेंस करेगी. यू हैव टू गो फॉर दोज फूड जो उसको बैलेंस करेंगे, कट डाउन करेंगे. आप किनोआ ऐड करो, होल व्हीट ऐड करो, ओट्स ऐड करो, बार्ले ऐड करो. Then comes your sweeteners. You can add rice syrup, your honey in moderation, or beverages में आप room temperature में lime या lemon water लो. You can even have orange drinks. ठीक है, अगर आप चाय ले रहे हैं तो mild चाय लें. Okay, don't go for very strong, because coffee is also one of the major reasons for causing anxiety. 1 cup of coffee, it takes whole 8 hours to get out of your system. अगर आप कॉफी ले रहे हैं, इट एक्ट्स एज अ नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटर. आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, तो आपका वाता बढ़ाता है. तो ऑलरेडी आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, और आपने उसको पैसिफाई करने के लिए ये कहा कि अरे यार कॉफी पी लेते हैं, स्ट्रेस हो रहा है. व्हाट विल हैपन? इट विल शूट और एग्रवेट योर एंजाइटी. So go for herbal teas. Go for tulsi tea. Go for jasmine tea, which is very good and palatable in taste as well. Okay, or go for lemon water. So types of food. हम सब ने सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में पढ़ा होगा. Are you all well versed with these terms? Yes, yes. तो सात्विक एक्चुअली होता क्या है? इट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ क्लैरिटी. वो खाना जो आपको क्लैरिटी देगा. यूजुअली इसकी जो वेवलेंथ पाई गई है, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम तक पाई गई है इन फूड्स की. राजसिक क्या होता है? वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है. मींस परसीव, आप किस वे में दुनिया को परसीव करते हो. तामसिक इज इनर्शिया, दैट इज एक्सपीरियंस. So according to the mental qualities they promote, food की कैटेगरीज भागवत गीता में इस तरह से डिवाइड की गई है. तो अब क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा राजसिक फूड जो परसीव करते हो, जिस वे में फूड को, राजसिक फूड में मोस्टली क्या होता है, थोड़ा सा स्टेल फूड आ जाता है, राजमा आ जाते हैं. एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी में आपके चने आ जाते हैं, व्हाइट चने आ जाते हैं. These are one of the major causes of anxiety. Even your breads come in this. तो अगर आप बहुत ज्यादा बर्गर्स और नॉर्मल ब्रेड ईटिंग के फैन हैं, इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर कॉजिंग एंजाइटी एज वेल. So this is the picture view of both the all the 3 categories. So classic food is one of the major reason for giving you anxiety. Okay, so these are the key points. अगर आप फूड को बहुत ज्यादा फ्राई कर रहे हो ऑयल में, या फिर बहुत ज्यादा आप उसको ओवर कुक कर रहे हो, या फिर एक्सेस में एक सात्विक फूड को भी खा रहे हो, वो भी राजसिक बन जाता है. ओके, सो तभी हम कहते हैं आराम से खाना खाना चाहिए. This is again the reason why our ancestors used to say, beta आराम से खाना खाओ. Because if you are hyperly eating, again the concept of physics, that is kinetic energy, comes up, and it will shoot or overstimulate your nervous system. स्पाइसेस आपको थोड़े कम या मॉडरेशन में डालने चाहिए, क्योंकि राजसिक फूड यूजुअली सॉल्टी होता है, पंजेंट होता है, ड्राई होता है, तो वो शूट कर देता है. ठीक है, तो आपके एक्टिविटी और मोशन को वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है. सो दीज आर द. अब आप क्विकली आप क्या कर सकते हैं अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है और अगर आप घर पे बैठे हैं. सो आप रात को क्या करें, आप आलमंड्स को क्रश करके, आप पहले तो आलमंड्स को आप सोक करके रखें, उसके बाद उसकी स्किन को निकालें. यू मेक अ पेस्ट आउट ऑफ देम एंड पुट द पाउडर इन वार्म मिल्क एंड हैव इट.
You can also take roasted cashews in a pan, make a powder out of it, put 1 tablespoon in warm milk, and before going to sleep, you can have that cup of milk and you will sleep like a baby. So आपको insomnia के issues बहुत अच्छे से tackle करता है. And even अगर आपको एंजाइटी है जिसमें आपके दिल की धड़कनें, you are having tachycardia or with increased heart rate, what you can do is you can take a cup of orange juice, उसमें 1 teaspoon of honey और nutmeg powder आता है वो आप डाल दो. So this will immediately work to control or pacify your anxiety. So how you can beat it? एक तो acceptance, how you can deal with situation. So you have to accept it. Okay, this is the situation. If I can deal with it, well and good. Give yourself a hug that yes, I can do it. But if you cannot, just surrender to the universe and let time do its work and give you the opportunity when the right time comes. Then is you can also do sesame oil massage. In Ayurveda, Bhyanga and oil massage, जिसको हम spas का आज के टाइम पे नाम देते हैं, बहुत ज्यादा फॉलो करते थे before taking a warm water bath. तो sesame oil का आप जरूर मसाज करें. It is one of the best oils to tackle anxiety, and even for old people or people who have dry skin, lot of dry skin, sesame oils work one of the best moisturizer. It also works like an SPF to your body and an antioxidant to your skin. Hot water bath आप करें night में before going to sleep, and diaphragmatic breathing. Now what is diaphragmatic breathing? So this is a technique. कि हमारे लंग्स को, हमारे थॉरिक्स को, एब्डोमेन से जो नीचे का हिस्सा होता है, ये मसल होती है डायफ्राम. इट सेपरेट्स इट. द लंग्स आर रेस्टेड ऑन द डायफ्राम एज यू कैन सी इन द डायग्राम. So while you breathe in, what happens is the diaphragm, it goes down and pushes all the abdominal organs downward. It massages our nerves and organs. जब आप breathe out करते हैं, the diaphragm, it forms a dome shape and it pushes our lungs and एकदम से blood pump करता है towards our lungs, towards our heart. So एक तरह से हमारी body की organs की, हमारे nerve, हमारे arteries की massaging होती है by doing diaphragmatic breathing. So when you are at home, regularly you can practice this diaphragmatic breathing. आपको क्या करना है? नीचे एक pillow रखना है. You can keep a pillow beneath your knees as well. Keep your one hand on your chest and one on your belly. You'll breathe in deeply and you'll just focus on your diaphragm. You'll feel that it will push the organs downward, and when you breathe out, you'll feel that muscle moving upwards. So as in the diagram, when you start practicing it 5 minutes daily, what will happen? It massages your vagus nerve, it increases the blood flow throughout your body, and it helps you to deal with your anxiety or curb down your anxiety and even stress. दूसरा, आप योगा प्राणायाम की प्रैक्टिसेस इंडल्ज करें. सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा एक पूरा 12 asanas का पूरा एक जिसे कहते हैं, it's a whole sar where you can practice and curb your anxiety. It heats up your body. Anxiety कब होती है? जब आपकी body की kinetic energy बढ़ती है. Now vata जो है, it is the kinetic energy, and vata is a mixture of air and space. Air is always cold, right? So since air is cold, you need something hot or warm to calm it down. So Surya Namaskar heats up your body and it calms the kinetic energy, which is hyperstimulated in your body. Then comes, these are the certain pranayam techniques you can do. The Bhrastakya pranayama is there, Brahmari is there. अगर आपको insomnia की problem है, आप रात को सोने से पहले bed पे just लेटे हुए, you can do the Brahmari pranayam techniques. Then comes your Nadi Shodhana pranayama, where you make a Nasaga mudra. आपने third eye chakra में अपने दोनों index finger रखनी है. You just close your right nostril, breathe in from the left and breathe out from the right, and then breathe in from the right and breathe out from the left. It is known as alternate nostril breathing. लेकिन आपकी inhalation और exhalation की जो ratio है वो हमेशा same होनी चाहिए. Means if you are taking 5 breaths in, then take out 5 breaths out, and vice versa. और अगर आपको बहुत ज़्यादा anxiety हो रही है, then what you can do is you can just close your
राइट नॉस्ट्रिल और सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो, बिकॉज द लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन इट रिप्रेजेंट्स योर सन व्हिच कंट्रोल्स द राइट साइड, योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो आपको वो एक्टिवेट करने के लिए अगर आप सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, इट विल calm down your anxiety. You can also do now, if nothing can be done and you are in such a situation you don't know what to do, just close your eyes and start focusing on your breathing. Now all the problems basically in our life, they start with the pran, that is the breathing. They do not reach our brain. We hardly take out time, a few moments in a day, to focus on our breathing. Breathing works as wonder, क्योंकि breath जो है वो हमारी brain की functioning में help करती है. When your breath stops, your mind also stops, and it is only your soul who exists. So breathing को तभी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, and that's why the yogis, they develop pranayama techniques to exercise our mind. Alternate breathing techniques उन्हें develop की थी so that they can exercise our mind through breaths. So just do simple conscious breathing every day if you cannot do anything. What happens is, whatever is the atmosphere around you, internally the atmosphere, it starts healing. Eventually it starts dissolving. Your emotions will start dissolving with time and you will start feeling better. Then there is Soham meditation. These are some meditation techniques. You can do mudras also. One of the best mudra for anxiety, I would say, is Vayu mudra. इसमें आपको क्या करना होता है? Your index finger को आपने base of the thumb पे रखना है like this, and put your thumb on the middle phalanx of your index finger. So since this finger, it represents your air element and your thumb the fire element, what happens is the fire, the heat, it calms down the cool air. That is the logic behind this mudra. In airport also, you will see all the mudras are there in Mumbai airport as well. So these are all based on this, again, Panch Tattva concept, because every finger, it represents the element, and the whole theory behind is the electromagnetic current which falls, which pulls down in your body while you make the mudra. Okay?